Good morning, all of you. Welcome back to the channel. So here we're starting with the news analysis for 5th of November. So we saw an earthquake in Nepal. The epicenter was there and 157 people have died because of that. It was of around 6.4 magnitude on the Richter scale. So this is in 2015, we saw that the earthquake had caused massive destruction back in 2015, and this was worst to hit the country since 2015. So it has destroyed many houses, and this was obviously mountainous region में है. So Nepal, when we talk about that, so we would talk about कि disaster preparedness बहुत important हो जाता है. Role of NDMA becomes important, and when we talk about urbanization, we are focusing so much upon building the high-rise buildings and societies. So the safety concern becomes important. So what kind of material is being used? What is the resilience of those buildings when we are having specifically higher magnitude of earthquakes, because northern India lies in the high seismic zone. So that becomes one important point. And apart from this, जो basic points रहते हैं, mock drills होना, people should be aware if there is an earthquake तो क्या safety steps और precautionary measures हैं, which would be ensuring कि least या minimum possible lives, damage jo ho, that should be least. So National Earthquake Monitoring and Research Center, this is one institutional authority that we have. So they have said that the earthquake tha within epicenter in Jararkot district, about this is 500 kilometer west of the Kathmandu, which is the capital of Nepal. So when we talk about earthquake, so there are two kind of waves, primary waves and secondary waves. So P waves and S waves are there, so we need to know the difference also between them. And with this, even in the mountainous regions also, we are seeing in Indian hilly states जो है like Himachal Pradesh, हम शिमला की बात करते हैं. So there are also, we are seeing कि वहाँ पे भी high rise buildings बनाई जा रही है, even when we talk about the societies. So कितना desirable है कि are they really safe, and जब हम बात करते हैं that too in the hilly states. So ये कुछ areas है जो मैं highlight करना चाहूंगी. अब आप लोग add up कर सकते हो. प्रवेश और नौशिक, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है. इसमें बस इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि एनडीए में गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द अर्थक्वेक। हाँ, लोकल विजिलेंस कम्युनिटी हो गया या फिर फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो गए, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आपदा मित्र हो गया एग्जाम्पल एक। तो इंडिया में और भी मेथड है जिससे आप अर्थक्वेक को इम्पैक्ट को कम कर सकते हो इन द रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। बिफोर द अकरेंस ऑफ डिजास्टर एंड पोस्ट में तो फिर थोड़ा, हाँ, दोनों। हाँ, दोनों मेजर्स क्या है वो इम्पोर्टेंट. देन फ्री राशन स्कीम टू बी एक्सटेंडेड फॉर 5 more years. दिस इज बीन अनाउंस्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर. सो अंडर दिस स्कीम, फर्स्टली अगर हम प्रोविजंस की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो it includes providing 5 kg of free food grains every month to around 80 crore Indians, which is slated to end this December, which was slated, but now it has been extended by another 5 years. So this is the name of the scheme is Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, जो कि 2020 में start की गई थी जब COVID-19 pandemic, basically we saw the onset of this pandemic. So 5 kg subsidized food grains, they were entitled under this National Food Security Act also, जब हम PDS स्कीम की भी बात करते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्कीम अनाउंस की गई थी. सो वी ऑफन टॉक अबाउट रैशनलाइजेशन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक पार्ट हो गया इसका, बट वी ऑल्सो नीड टू लुक इनटू कि क्यों इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 एंड स्पेसिफिकली ऑन द poor people, तो वो जो impact था, how much time are actually they are going to recover and come back to the pre-COVID situation, that needs to be assessed, and that can be one of the reasons behind extending this particular scheme of free ration. And obviously this would be also impacting somewhere how much even the surplus food grains have to be maintained, and obviously food security. So these are certain aspects which are interrelated, and the schemes have already been mentioned, the acts have been mentioned over here, and the scale of the scheme, like it is being delivered to 80 crore Indians, so that is really huge. So somewhere when we talk about even the success your distribution network hai, how efficiently that is functioning, ki we are able to deliver free food grains to 80 crore Indians, so even that we can talk about as a part of its success. So
The government has taken 13.5 crore people out of the poverty across the country and was empowering them. So when we talk about reduction of the poverty rate, so that is happening. Poverty is reducing in India, and specifically what is important is the multi-dimensional poverty. So providing free food grains is one part of that when we talk about the multi-dimensional poverty. Okay, now you can add up if you want to add something new point in this particular topic. No, Mansi, we can move forward. Okay. प्रवेश ऊपर Mansi ने हाँ प्रवेश what is the difference between the primary pollutant and the secondary pollutant? Because it is talking about the poisonous pollutant Hmm. peaks at आनंद विहार. तो इसमें दोनों होता है, प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है. तो प्रवेश, कैन यू मतलब जस्ट गिव सम इंट्रोडक्शन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दैट. So primary pollutants are basically those pollutants which are emitted directly from a source. For an example, we have nitrogen oxide, sulfur oxide, and secondary वो होते हैं जो कि by chemical reaction से बनते हैं. So this is the thin line of difference between the primary and secondary. Oh, okay, can you give हाँ an मतलब हाँ. example of secondary pollutant का कोई example भी बता दो. Ozone. Ground level ozone मुझे specifically. हाँ ठीक है, I ग्राउंड think. लेवल हो ना, पैन, PAN. और बेंजीन भी हो सकता है अगर आप बन सकता है तो. हाँ, तो benzene. प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है वो डायरेक्टली पोल्यूटेंट सोर्स से, और सेकेंडरी की आफ्टर दे के रिएक्ट विद ईच अदर, और जो भी होता है ऑनलाइन, जो भी केमिकल होता है प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, दे Hmm. कॉजेज सेकेंडरी पोल्यूटेंट. So particulate matter, Oshik, is a primary or secondary? पार्टिकुलेट मैटर सेकेंडरी भी हो सकता है, क्योंकि हाँ मतलब 100% तो हाँ नहीं हाँ, बोल सकते कि वो प्राइमरी. किसका पर्टिकुलर मैटर है बेसिकली, किसका है, वो भी इम्पोर्टेंट है. वैसे पर्टिकुलर मैटर इज नॉट अ केमिकल, मतलब वो तो बोला जाता है कि पर्टिकुलर मैटर इज. So particular matter, particular pollutant or particular matter is basically emits from both the primary sources of pollutants and secondary sources of pollutants. so we are seeing farm fires, and this is basically यस. a picture of from which has been provided by the NASA satellite. So we see कि जो red dots है, these are showing the land fires, the farm fires जो stubble burning की जा रही है. So you can see maximum is that concentrated, it is in the Punjab region. But of late we are also seeing कि states like उत्तर प्रदेश में भी stubble burning के incidents rise होते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो ये problem में और ज्यादा add up करेगा. So मेरा हमेशा एक रहता है क्वेश्चन इसमें हम्म, कि हमेशा हम नेशनल सैटेलाइट क्यों यूज करते हैं. मेरा डाउट होता है, मेरा क्वेश्चन नहीं है ये, कि अपने पास सैटेलाइट है, ये रीसैट है, फिर और बाकी सब भी है जो इमेजिंग करते ही है ऐसे ही. हम्म, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन नासा इमेज, कि उसी का सैटेलाइट यूज करते हैं. नहीं इट ये इज तो बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी की हम लोग पास है, ऐसा है नहीं टेक्नोलॉजी. नहीं, ये चीज तो नहीं बोल देखना पड़ा. सकते औशिक कि अब हम डिपेंडेंट हैं. मतलब ठीक है, ये नासा की सैटेलाइट की जो इमेज है हम वो न्यूज़पेपर में उसी को पब्लिश कर रहे हैं. वी आर हैविंग लाइक टेक्नोलॉजिकली वी आर नाउ केपेबल एंड वी आर हैविंग लाइक सैटेलाइट्स आल्सो दैट हैव बीन लॉन्च व्हिच आर पुट इन प्लेस. सो मतलब डिपेंडेंसी वाला एलिमेंट तो अब नहीं बोल सकते हैं. लाइक प्रॉपर हाँ हो सकता है. इंफॉर्मेशन नेविगेशन देखना सैटेलाइट. पड़ेगा मानसी, क्या है, हमेशा नासा ही कर रहता है, तो मुझे डाउट होता है इसमें. नहीं वैसे अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स भी हैं इंडिया की, बट ओशिक, मुझे इसमें हाँ एक चीज बोलनी है कि जो नासा है उसके जितने भी ये सैटेलाइट इमेजेस होते हैं ये फ्री में प्रोवाइड की जाती है और इसका कोई कॉपीराइट नहीं होता है, पहली चीज. और दूसरा, हर कंट्री के साथ मतलब एक म्यूचुअल कोऑपरेशन है कि वेदर फोरकास्टिंग के ऊपर, जिसमें इंडिया भी है, तो इसीलिए हाँ नासा ये का यूज हाँ. करते हैं. ठीक. सोचिए कितना सॉफ्ट पावर है एक तरह से, हाँ सॉफ्ट. हम्म. यूएस का फ्री इमेज है, लेकिन नासा का एक ब्रांडिंग इमेज भी हो जाता है वर्ल्ड वाइड. ऊपर करेगा मासी का.
कौन सा टॉपिक है? जस्ट इसके ऊपर वाला टॉपिक, हाँ ऊपर वाले, हाँ तमिलनाडु एक्सक्लूडेड रेफर, ठीक है ठीक। तो वीसी का हम लोग बात कर चुके थे पहले, वाइस चेयरमैन का जो पैनल का था बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट था, ठीक है। विटनेस ड्रिलिंग So, Ashik, why do we have the hackies in implementation or it is not implemented? रिगार्डिंग द वीसी चेयरमैन, उनका बात कर Hacky, रहा hacky, I'm saying Higher है Education कि Council of India. है कि हाँ, तो हायर एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन में क्या, आई हैव टू लुक इनटू इट, मतलब Okay, बताइए आप sure. क्या चीज़ है। So basically, the UGC Replacement Authority is HACI, Higher Educational Council of India. So why it came via the parliamentary bill. So it is a statutory body which will have the regulations, financial as well as administrative power over the non-technical but medical and legal institutions. So it will replace the UGC, and the primary functions will be three: regulation, accreditation and professional standard set करने की powers होगी, और this will be under the Ministry of Education. So these are some information regarding the hacking. ठीक है, तो यहाँ पे थैंक भी यू। have one of the reports from the Commission for Air Quality Management। तो उनका कहना है ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी दिल्ली एनसीआर रीजन में इट हैज बीन इम्प्रूविंग। सो अभी जो अगर हम बात करते हैं वर्सनिंग ऑफ द एयर क्वालिटी, तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वी सी दिस फिनोमेना, एंड कहीं ना कहीं इसमें डेफिनेटली जब हम बात करते हैं कि anthropogenic factors are responsible for this, but kind of climatic factors like the fall in the temperature, that is also one of the major factors, and reduced wind speed during this particular time period. So all in all ये सब चीजें contribute करती है towards worsening of the air quality, and we can look into again composition of this commission. So I think, Mansi, this commission is constituted by the government of India in collaboration with the, I think, 5 states, that is the Punjab, Himachal, Rajasthan, Haryana, Delhi, and UP. And along with that, this is the major agency which controls the GRAP, which is a graded response action plan to take the immediate actions to control the pollution in the Delhi NCR region. And along with that, its mandate is to prevent the pollution, take preventive measures against this. So these are some information regarding this. And it comes under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Yes. Okay, then. So some traders, they are taking advantage of the seasonal change in the onion supply. So due to seasonal changes, कहीं ना कहीं हमें demand supply mismatch देखने को मिलता है, जिस time period के दौरान हम बोल सकते हैं कि hoarding activities traders के द्वारा और ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो mismatch है कहीं ना कहीं और ज्यादा gap create हो जाता है, and उसकी वजह से definitely we are seeing food inflation. So Union Consumer Affairs Secretary has said कि export curbs and other recent measures, they are stabilizing the onion prices. So export curbs is one of the measures कि domestic जो supply है onion का that remains adequate, and pulses की अगर हम बात करें तो they remain expensive right now. He says that curbs, they won't impact rural economy and purchasing capacity of the farmers, and जो ingredients है for making the Dipavali sweets, they are also available in plenty. तो कहीं ना कहीं seasonal factor की वजह से भी demand हमें और increase होती हुई दिखाई दे सकती है। So ये बोला जाता है कि export curbs जो इम्पोज किए गए हैं वो फार्मर्स के लाइक फेवर में नहीं है। सो कहीं ना कहीं एमएसपी इंक्रीज की गई है, बट दैट इज ऑल्सो, वहां पे भी एक चैलेंज है कि इनपुट प्राइसेस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो दैट इज नॉट इन प्रोपोर्शनेट अमाउंट दैट इज बीइंग डन। एंड एक्सपोर्ट कर्व्स अगर आप कर रहे हो तो डोमेस्टिक मार्केट में आप सेल कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली डोमेस्टिकली डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। So overall, consumers के perspective से भी और farmers के perspective से भी the decision has been taken, and it is not taken from the perspective of anti-farmers point of view. Apart from this, we have this top scheme जिसमें tomato, onion and potato के prices को regulate किया जाता है. It is ensured कि hoarding
कम से कम हो, सो उसके लिए भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, गाइडलाइंस है, दैट इज issued by the Consumer Affairs Ministry as well. And definitely the role of Food Safety and Standards Authority of India. And then when we talk about the FCI, Food Corporation of India, their role is also very important. प्रवेश And Mansi, one more हाँ. thing I would like to add, that in the CAQM cases, all the cases will not be dealt by any court, even by the Supreme Court. It will be dealt by the NGT only. Okay, you're talking about which types of cases? CAQM, any type of cases regarding the पॉपुलेशन CAQM. का बात हो रहा अच्छा, है, एयर Pollution. पोल्यूशन. ओके ठीक है. अभी वाला जो इसमें मानसी, आई वुड लाइक टू ऐड कि द एक्ट which under which the central government takes action is called ECA, Essential commodity. Essential Commodity Act 1955. और जो procurement होता है by the government, it is by FCI for the rices and wheat pulses के लिए है NAFED हाँ. procurement का एजेंसी. और एडिबल ऑयल की भी अगर हम बात करें तो राइट नाउ अगेन इंडिया इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट अपॉन द एडिबल ऑयल. सो लाइक एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यहाँ Mostly पे palm oil is आपको imported from Indonesia and Malaysia, and whereas sunflower oil is imported from Ukraine and Russia. तो दैट इज देयर. बट हाँ, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे भी लाइक अगर हम टेन्योर की बात करते हैं तो प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो अगेन जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, उन्होंने ये डिसीजन दिया था कि ऑब्वियसली आप जितना एक्सपोर्ट कर्ब्स उन्होंने बेसिकली लगा दिए थे. तो ये एक अगेन कहीं ना कहीं दैट इज व्हाट इंडिया इज आल्सो डूइंग इन दिस केस. बट इस केस में जो डिफरेंस है दैट इज जो मोनोपोली हो सकती है, हम बात कर सकते हैं कि मोनोपोली ऑफ द सप्लाई जो हम इंटरनेशनली प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनियन के केस में वो इतनी ज्यादा नहीं है. सो वी हैव मोर डाइवर्स प्लेयर्स व्हिच आर आल्सो सप्लाइंग ऑनियन इंटरनेशनली एज वेल. But edible oil के केस में ऐसा नहीं है. Only handful countries are there which are having sufficient reserves and the domestic production, and that's how they are also able to export that. And pulses का भी हमें देखना पड़ेगा from which all countries do we import. So we have imports of tur from countries like Myanmar and East African countries. So when we talk about the relationship between India and Africa, so in terms of import, we can go into this particular thing कि we also import pulses from East African countries. And so Oshik, I have a question to you. What are the two important reasons because of which we are seeing the inflation in the oil, in the onion prices, or the hike in Indian the onion prices. price? हाँ Onion. हाँ हाँ. First of all, seasonal change and the erratic rainfall, जिसमें the the production is very different from last year, तो उसमें predict नहीं कर सकते. Second would be the Okay, Mansi, can you please हाँ बताइए. explain? मैंने बोला ना, डिमांड सप्लाई मिसमैच एक सबसे बड़ा रीजन यही है. नहीं, वो इसके अलावा, मतलब उसके अलावा जो ठीक ये है, तो ये डिस्कस So कर the लिए थे. major reason as per सबसे the broad major reason as per the government is cartelization by the retailers. अरे ये सब ऑलरेडी मेंशन हो चुका है. अगर मैं हाँ, ब्रॉड इसके बाद बता रहा है, डिमांड सप्लाई ब्रॉड इसके बाद. ब्रॉड है, इसके अंदर फिर माइक्रो रीजन ज्यादा थे. सप्लाई के पर्सपेक्टिव से सप्लाई क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है, एक वो मानसून की वजह से हो गया, एल नीनो इफेक्ट की वजह से हो गया. एंड डिमांड की अगर आप बात करो, डिमांड इंक्रीज होती दिखाई दे रही है, तो डिमांड में भी वो सीजनल फैक्टर भी है और बिकॉज हाँ, सीजनल प्रोडक्शन भी तो कम होते जा रहे हैं, कम और बढ़ते जाते हैं. तो हाँ. ये मिसमैच की वजह से और ऑब्वियसली कार्टलाइजेशन एट द सेम टाइम इज हैपनिंग, सो इसलिए एक्सपोर्ट कर्व्स भी लगाए गए हैं. एनमी प्रॉपर्टी है कैसे? एनिमी प्रॉपर्टी एनमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, 8 is which there. is binding. It says that enemy property, मेरा मतलब कि पाकिस्तान या बांग्लादेश, बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान में उनका कोई अगर प्रॉपर्टी है, जो लोग माइग्रेट किए थे, उनका एनमी ट्रीट किया, एनमी प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाएगा उनका. उनको सेल नहीं कर सकते और उसमें आप बिजनेस नहीं कर सकते. बेसिकली इट इज बेसिकली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. एनिमी प्रॉपर्टी इज एनी प्रॉपर्टी जो इंडिया में ही लोकेटेड है, बट ओनर की हाँ. हम बात करते हैं तो दैट ओ, पर्सन इज फ्रॉम अ कंट्री जो एनिमी कंट्री होती है. सो दैट इज वाई वो प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी बोला जाता है. हाँ, इट ऑल्सो इंक्लूड्स चाइना ऑल्सो.
मतलब चाइना भी इंक्लूड है इसमें, हम्म। ये सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश है अभी के हिसाब से। So this is specifically Butler Palace, जो आप पिक्चर में भी देख सकते हो. It was left deserted and in darkness for many decades. And now इसको एक टूरिस्ट हेवन में कन्वर्ट करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं. लोकल पीपल बिलीव दैट हाउस इट वाज बिल्ट अ सेंचुरी अगो. एंड अगर हम आर्किटेक्चरल डिजाइन की बात करें तो इट इज अ मिक्स ऑफ राजस्थानी एंड इंडो मुगल स्टाइल्स. सो दैट इज the specific things about this. And apart from this palace was originally built as the official residence of the commissioner of Awadh. So Awadh obviously was one of the strategic and important locations back in historical times. And it was built by the Harcourt Butler in 1915. It was owned by the royal family of Mahmoodabad. So that's there. And then this family it migrated to India in 13th century and settled in erstwhile Awadh, which is the current Lucknow, in 16th century. And then it was they also owed allegiance to वहाँ the. से ये स्पेसिफिक हो जाता है, जरूरत नहीं है हाँ, मतलब ये मतलब ज्यादा। फैक्चुअल हाँ, डिटेल के लिए पर्सपेक्टिव से इट्स लाइक. इससे मैं ऐड करूंगा एनबी प्रॉपर्टी में, एनबी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, इट रिकॉग्नाइजेस कस्टोडियन ऑफ एनबी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, और किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। और दूसरा है कि एनी प्रॉपर्टीज हैव बीन असाइन टू द होम्स, हो गया रियल एस्टेट होता है, बिल्डिंग्स होता है, प्रेसियस मेटल और गोल्ड भी दिया जाता है प्रॉपर्टी, गोल्ड और ज्वेलरी भी आ जाएगा उसके अंडर में। दूसरा कि इंडिया एंड पाकिस्तान वाले पे भी इनकी प्रॉपर्टी आएगा, और साथ ही साथ चाइना, चाइना से रिलेटेड भी आएगा, क्योंकि वी हैड फॉट वॉर्स विद चाइना इन 1962 और पाकिस्तान विद 1965 एंड 1971, इसलिए ये दो Oshik, कंट्रीज एनिमी है बेसिकली। Oshik, हाँ, let me rectify this statement which is given by you. The Enemy Property Act is solely dealing with the Pakistan. There is no mention of Bangladesh and China as such, which you just mentioned, because the Enemy Property Act 1968 was passed by Parliament specifically for the appropriation of property in India, which is owned by the Pakistani nationals. So it is a kind of Indo-Pak war. It came after the Indo-Pak war of 1965 to have the custody of the such enemy property to the government departments of the India. So प्रवेश there मैं is ना, no. प्रवेश मैं देख के बोल रहा हूँ, ठीक है? नहीं मतलब बांग्लादेश का आप कैसे मतलब चाइना का आप कैसे बांग्लादेश लिंक नहीं कर था वो, रहे हो? ईस्ट पाकिस्तान था वो। नहीं आप कह रहे हो ना ईस्ट चाइना. पाकिस्तान से कनेक्टेड कनेक्टेड है, और चाइनीज से भी। एनी प्रॉपर्टी जो है इस पे तो लिखा हुआ है। आप ऑफिशियल सोर्स से देख रहे हो? Any property is property who have left behind India by people who took Pakistani and Chinese citizenship. अब पाकिस्तानी सिटीजनशिप इसलिए बात हो रहा है क्योंकि 1971 के पहले पाकिस्तान था, हाँ, अभी बांग्लादेश हो चुका है, ठीक है. इसलिए। नहीं, आप किसी ऑफिशियल सोर्स से पढ़ रहे हो, वहां से चेक कर रहे हो? ऑफिशियल सोर्स है तो देन वी कैन रिलाई, अदरवाइज वील हैव टू चेक इट फ्रॉम ऑफिशियल सोर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस एक बटलर लेक भी लोकेटेड है, तो इसको भी हम वी कैन रिमेम्बर कि इट इज लोकेटेड इन लखनऊ. बटलर लेक. थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ. So double standards of US. When we talk about human rights, this has been highlighted by Ranil Wickremesinghe from Sri Lanka. So basically, double standards over human rights in Gaza and Sri Lanka. So Sri Lankan president has accused the West and US in particular double standards in addressing human rights concerns in Gaza and Sri Lanka. So all measures that have been taken to combat terrorism, they must comply fully with the state's obligation under the international law and obviously human rights law also. So basically the West, including US and Canada, उन्होंने श्रीलंका के against resolution pass किया था. So that is why he's calling it to be a double standard. So he's referring to 2022 resolution that was passed by the UN Human Rights Council that, among other countries, called upon Sri Lankan government to ensure that there is prompt, thorough, and impartial investigation, and if warranted, prosecution of all the alleged crimes relating to human rights violations. So what about the human rights violations which are happening in Gaza? So उस पे क्या Western world का stand है? So that is what he is bringing out. So that's there.
So monkeypox virus is evolving due to human transmission. So एक ये सबसे बड़ा challenge रहता है the basically viruses में जो genes mutations होती हैं, because कहीं ना कहीं जो effectiveness है of vaccines and the medicines that we have वो और reduce हो जाती है. So sustained transmission among the people marks a fundamental shift in monkeypox epidemiology as zoonosis highlight the need for revising public health messaging around monkeypox and outbreak management and control. So that's there. And अगर आप लोग confirm कर सकते हो कि we have do we have completely eliminated monkeypox from India or not? No. Okay, it is still prevalent. So we are seeing the virus has been circulating in humans since 2016. So NICED, it makes quick detection of drug-resistant H. pylori possible. So from the perspective of the institution that we have, so ICMR NICD, which is the National Institute of Cholera and Enteric Diseases. So we need to look into specifically its again composition, whether it is statutory body or what is basically the nature of the H. pylori. एक bacteria है which grows slowly and it takes about a week to culture this bacteria and a couple of more weeks to test for the drug sensitivity with the new diagnostic which is called as assay bypasses. So this is a molecular based assay and 100% sensitivity and specificity have been found as a result of this. So that is one of the achievements. And obviously this bacteria, it is prevalent in India, leading to decreasing success rate in treating the infection. And apart from this, we see so Himanshu, we can genome see that how the sequencing to conventionally used empirical treatment are using clarithromycin, जिसको यूज किया जाता है ड्रग सेंसिटिव को नोटिफाई करने के लिए, एंड क्लैरिथोमाइसिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है उसका राइजिंग कंसर्न हो रहा है. और दूसरा हम ये जो है पाइलोरी देख रहे हैं, एंड म्यूटेशन भी होता है इन दी आरएनए जीन ऑफ द बैक्टीरिया. देन ड्रग सेंसिटिविटी बैक्टीरिया ये गट पैथोजेंस में भी देखे जा रहे हैं, एंड ड्यू टू वीक बाइंडिंग लेस अमाउंट ऑफ ड्रग इज एबल टू गेट इनटू द बैक्टीरिया जो उनको मार नहीं पा रहे. सो दैट इज आल्सो द cause because of which they are rising. And so 2 steps PCR method was also evaluated. तो हमें again we need to be clear with this PCR method क्या होता है properly. इसकी technicality important हो जाती है. So कैसे environmental factor it determines height of the children. See एक तो हो सकता है कि it can be on the basis of genes also. So वो हो गया biological factor. Environmental factors like socio-economic status, nutrition, infection load that influences the childhood growth. So herein we have the Center for Cellular and Molecular Biology along with several of the national and international institutes. They have carried out a study in order to study this linkage between them. So we see कि the genetic variants they've been studied, they play a greater role. Okay, environmental factors ज़्यादा greater role play करती है compared to the genetic variants in determining height of the children in low and middle income countries, contrast to the European nations. So this can be one of the factors जब हम even when we talk about environment and when we talk about the nutritional insecurity तो एक ही aspect हम लेके आ सकते हैं. So quoting World Health Organization 2021 estimates also. So they also indicating a large proportion of the stunted children, they reside in the low and middle income countries, particularly South Asia, Sub-Saharan Africa, where undernutrition and associated comorbidities, they are more prevalent. So this can be taken up at relevant places. And we can also see that what are the epigenetic processes, which majorly are DNA methylation and histone modification. जहाँ पे and what is the methylation process? It basically a chemical modification जिसमें जो DNA molecules होते हैं उनको use किया जाता है by cells to regulate the gene expressions. So this is a scientific
definition of these concepts. और ये भी इसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ दी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की आपकी डाइट कैसी है, कौन से ड्रग्स ले रहे हो, वेदर यू आर स्ट्रेस्ड और एंजाइटी लेवल्स जो होते हैं, एक्सपोजर टू केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स. So epigenetic processes is basically the term which is used. So this way What is status of the Kavach? Kavach installations in trains. So basically Kavach system जो है वो trains railway safety के लिए it is installed, but recently अभी हमने ये मैं देखा ले लेता हूँ मानसी, देश में. ये ले लेता हूँ. Okay. हाँ, बेसिकली कवर सिस्टम इज डेवलप्ड बाय ऐसे करके, हाँ, इंडियन रेलवे रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये डेवलप किया है. इट इज डिजाइन टू गिव वार्निंग टू लोको पायलट. अगर पहले से ही वहाँ ब्रेक सिग्नल चाहिए तो उसके लिए रेड सिग्नल दिया जाता है, एंड इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग इट इज गोइंग टू ओवरशूट सिग्नल. तब जाके लोकल पायलट ब्रेक कर सकते हैं और अपना ट्रेन रुक जाएगा विदाउट ऑटोमेटिकली विदाउट अप्लाइंग ब्रेक्स. तो इट इज ए बेसिकली ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम अगर एक शॉर्ट फॉर्म में बताया जाए कवच. तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम जो है इट वाज सेटअप सो दैट जो कोलिजन हो वो आपस ट्रेन के बीच में नहीं हो. और इसको कहाँ तक अप्लाई किया गया है तो ये नीचे में दिया हुआ है, तो करेंगे तो पहली बात इसमें कि RFID क्या क्या कंपोनेंट है. हाँ, Oshik, RFID है इन sorry द to ट्रैक्स. हाँ interrupt you, बोल. but can I ask one question to you? मान लीजिए कि ट्रेन कोलिजन के लिए तो एक काम कर रहा है. अगर हम ट्रेन और एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात करें तो क्या अगर मान लीजिए कि हाथियों का मतलब एक ग्रुप है ट्रेन की पटरी पे, तो क्या उसको देख करके कवच सिस्टम मतलब यूज कर सकते हैं वहां पर? नहीं कर सकते क्योंकि हाथी में RFID नहीं लगा हुआ है ना. जो ना दो ट्रेन है, सामने वाला ट्रेन जो आएगा उसमें भी RFID ठीक लगा हुआ, इसके पास भी RFID है. दोनों का जो ठीक है. इंटरेक्शन होगा उसके हिसाब से होगा. तो ये दिया हुआ है पर. सेकेंडली लोकोमोटिव ठीक. विच इज ड्राइवर्स केबिन इज प्रोवाइडेड बाय RFID रीडर कंप्यूटर एंड ब्रेकिंग इंटरफेस सिस्टम. तो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग लगेगा. तो हाथी के लिए हम लोग अलग कर सकते हैं. हम लोग एक अच्छा ही टेक्नोलॉजी था जर्मनी में, जहाँ पर जो ट्रैक है ना, ट्रैक में कहीं वो पत्थर लगा देते हैं, पत्थर डाल देता है, या फिर कोई हाथी अगर पार भी होता है ट्रैक से तो करंट फ्लो अगर ट्रैक में होते रहेगा, स्मॉल माइन्यूट करंट फ्लो, अगर वो ब्रेकेज होता है तब ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि कोई ना कोई पार हो रहा है थोड़ा नहीं तो पत्थर इंटरवल में. डालेगा कौन? जब ऐसा दिखा गया है, पर ऐसा केसेस दिखा गया है अच्छा. कि पत्थर रखा हुआ है ठीक. ट्रैक के ऊपर ठीक. में. तो उसको रोकने के लिए, तो सैबोटाइज होता है ना, तो उसको अगर रोकने के लिए कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं थ्रू द ट्रैक. और जैसे ही ब्रेकिंग आएगा उस समय आप ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट हो सकते हैं. लेकिन वो देखा जाएगा. तो पहले पूछा जाता है कि कवच इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, वो बात कर दिए. और इट ट्रांसमिट द सिग्नल. और जैसे कंपोनेंट्स हाँ, कवर कर लो. 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हाँ है. कर लिए थे इसको कि RFID और RFID. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं. ये अच्छा, ये आप कवर कर चुके हो क्या? हाँ, हाँ. ठीक है. RFID रीडर्स हो गया. और उसको कवच कैसे काम करते हैं बता दिए कि RFID सिग्नल अगर सामने से आता है, यहाँ से भी जा रहा है, तो दोनों का जो इंटरेक्शन होगा इट विल ट्रांसमिट सिग्नल एंड इट विल रीड ईच अदर RFID एंड ऑटोमेटिकली द ब्रेकिंग विल बी इम्प्लीमेंटेड. तो ये दिया हुआ है. डिस्प्ले मॉनिटर भी रहेगा फिर. आ, लेकिन यही बात है कि ये कहाँ काम नहीं कर सकता है. जहाँ पर ऑटोमेटिक ऑलरेडी ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम है वहां पर काम नहीं कर सकते. या फिर प्रवेश ने पूछा एलिफेंट कोई पार हो रहा है वहां काम नहीं कर सकता, तो इसका भी लिमिटेशन है नहीं, कवच लेकिन सिस्टम यहाँ का. पे लिखा हुआ है कि विजुअल इंटरफेरेंस कोई इसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है इन द वर्किंग. अगर हिल्स नहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है तो एनिमल्स अगर पास कर रहे हैं तो वो कैसे एक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है? हाँ, नहीं तो नहीं मानसी, करते ना, इसी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कारण कह तो रहा, नहीं. मतलब मैं हाँ, तो मतलब उनकी डेथ बचाने के लिए मैं तो पूछ रहा हूँ ना, हाँ, मतलब वो आपका ना क्वेश्चन मतलब. उस कॉन्टेक्स्ट में था, बट यहाँ पे जो औशिक बोल रहा है उसकी फंक्शनिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं ना. नहीं मैं उस पर काम नहीं करेगा वो बात कर रहा हूँ मैं. आपको अच्छा उससे तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तभी तो काम नहीं. हाँ, ठीक है. काम नहीं करे ना अगर सामने से अगर कोई पार होगा. ऐसे ये तो उसमें. एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में काम नहीं करेगा, बट अगर ट्रेन टू ट्रेन कम्युनिकेशन की बात करें तो इवन हाँ, अगर उस तो काम करेगा ही. क्रॉस कर रहे उसी के हैं. लिए तो बना ही है ये. हाँ, मतलब नहीं, विजुअल उसी के लिए बना हुआ. इंटरफेरेंस हो जाता है ना. ये क्वेश्चन आ सकता है हिली टेरेन्स में क्या ये काम करेगा, तो हिल्स क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है इन इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रेन्स. तो RFID में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा ना. RFID है वो. तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, लेकिन कोई भी पार होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन तब काम नहीं करेगा, वो बात हो रही है यहाँ पर. तो
तो अप्रोक्सीमेटली 50 लाख पर किलोमीटर कॉस्ट होता है, जो बहुत ज़्यादा है। और 68,000 किलोमीटर रूट है, टोटल रूट है। तो अभी तक में करेंटली इंडियन रेलवे हैज़ अलॉटेड 4,000 करोड़, जिसमें से सिग्निफिकेंटली सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम बजट उसको 2,000 करोड़ दिया गया। राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष, RRSK, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इम्प्लीमेंट्स द कवर सिस्टम, और it is only implemented in the 2,500 to 3,000 किलोमीटर ऑफ इंस्टॉलेशन। तो मात्र 3,000 किलोमीटर आउट ऑफ 68,000 किलोमीटर में इम्प्लीमेंट हुआ है कवच, तो बाकी बचे। हाँ, मतलब इवन हम बोल सकते हैं अराउंड 5% ही इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, we can move forward. कौशिक, जो नेशनल हाईवेज पे जो टैग्स होते हैं जो गाड़ियों के ऊपर जो हमारा टोल काटते हैं, क्या उसमें भी RFID टेक्नोलॉजी यूज होती है? Yes. हाँ, ठीक है। यस। So when we talk, RFID है कैसे? रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला है ना, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज होता है, सिंपल। so oligopoly's control over the rare earths is key green transition snag. So oligopolies basically means control by a few. So few companies ऐसी हैं जो कंट्रोल कर रही है रेयर अर्थ्स का सप्लाई। सो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ जो पावर उनके पास है कि कितना आप एज एन आउटपुट प्रोवाइड करोगे, किस प्राइस पे आप उसको सेल करने वाले हो, अवेलेबल करने वाले हो, तो उसकी वजह से ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो दैट कैन गेट इम्पैक्टेड, एंड ऑब्वियसली डिसरप्शन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ सप्लाई डिसरप्शंस दैट can be made possible by these oligopolies. So we can say that they are working like a cartel, क्योंकि oligopolies में भी specifically there are different forms like collusive oligopoly, तो उसमें that's how they are functioning. So funding to help the developing countries could also be weaponized, and that has been warned by our chief economic advisor, and urges investors in green transitions to absorb the greed. So obviously we need to rise above this thing ki not from the perspective of greed. You need to go ahead when we talk about from the perspective of welfare and the need and the importance of it. So this is one thing. So we see the cautions against the potential weaponization of the external financing of the developing countries. That is one. Another, this is we can say कि ये second challenge हो जाएगा climate financing के around. Then stresses the need for public funding of the green transitions, including carbon sinks में आप बात करो तो green hydrogen की आप बात करो. So public sector funding, but वहाँ पे भी obviously limitation है, financial resources they are limited amount में available है, and fiscal prudence के ऊपर जो fiscal deficit के ऊपर impact होगा, तो obviously that also needs to be factored in जब हम बात करते हैं public funding की. Then public investment की यहाँ बात की जा रही है. So again fiscal policy की यहाँ बात की जा रही है, fiscal expansionary fiscal policy specifically green energy sector के लिए. And with this, countries they must be allowed to own their climate agenda while focusing on economic growth. So this needs to be obviously understood by even the developed countries at the same time. कौशिक, हाँ बोले प्रोश। हेलो। आप हेलो। मुझे ये बताइए कि यस, where is the rare earth minerals are used maximum, in which particular sector? It is mostly used in the electronic sector, electronics and communication electronics. Specifically Okay. और बात करें तो बैटरीज में, I mean the high technology, बैटरी हो industries. गया, सुपर कंप्यूटिंग हो गया, चिप्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, डिजाइनिंग सब जगह। ठीक है. ओके, नाउ वी कैन ठीक है, क्या LED में यूज होता है? हाँ, ठीक है, सब वही है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना सब। हाँ. ठीक। Okay, so we can continue in part 2 of the video.